Hi. So welcome on Unacademy platform. The first question is from ray optics. Let's read the question. A thin convex lens designed by two material having refractive indices N1 and N2 as shown in the figure. The left hand side and right hand side surfaces of the lens having same radius of curvature. F is the focal length of the lens if the refractive index N1 is equal to N2 is equal to N. The focal length of lens is F plus delta F if N1 is equal to N and N2 is equal to N plus delta N, where delta N is much smaller than N minus 1 and 1 is smaller than N, which is smaller than 2. Then the correct options is oblique R. Option A. If delta N divided by N is less than 0, then delta F divided by F is greater than 0. Option B. If N1 is equal to N2 is equal to 1.5, delta N is equal to 10 to the power minus 3 and focal length F is equal to 20 centimeter, then delta F is equal to 0.02 centimeter. Second place to the decimal. Option C. Delta F divided by F in magnitude is smaller than delta N divided by N in magnitude. Means magnitude of delta F divided by F is smaller than magnitude of delta N divided by N. And option D. The value of delta F divided by delta F divided by F and delta N divided by N remains unchanged if the convex surfaces of the lens is changed by convex surfaces having same radius of curvature. Right? This is question and which is based on lens maker formula. So let's go for solution. The solution of question number 1. According to question, given that N1 is equal to N2 is equal to N, then using lens maker formula, 1 divided by F will be equal to N minus 1, 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. This is lens maker formula. N is the refractive index, R1 and R2 are the surface radius of curvature of both the surface. So, according to question, refractive index is N. So, we can say that 1 divided by F will be equal to N minus 1, or assuming that दोनों surface के radius of curvature यानी R1 is equal to R2 that is equal to R, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है. अब फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेंस है N1 और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड सरफेस का मटेरियल लेंस का N2 है. सो N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय R फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस R सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट 1 divided by F which is equal to 2
in bracket n minus 1 divided by r. So f goes to r divided by 2 in bracket n minus 1. This is the focal length f of lens if n1 is equal to n2 is equal to n. Now, in second case, if the two lenses are placed where distance between place is 0, then the concept involved is net focus of the lens 1 divided by f is equal to 1 divided by f1 plus 1 divided by f2. So, f की जगह क्वेश्चन में दिया गया अगर n1 की वैल्यू n है और n2 की वैल्यू n प्लस डेल्टा n है. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द लेंस. सो फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस f की वैल्यू हुई 1 डिवाइडेड बाय f प्लस डेल्टा f बराबर n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r and which is positive from the ray optics convention minus 1 divided by infinite क्योंकि सेकेंड सरफेस फर्स्ट लेंस का प्लेन है और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है प्लस f1 डिवाइड बाय f2 की वैल्यू अगर लिखें सो n2 माइनस 1 और सेकेंड लेंस के लिए फर्स्ट सरफेस प्लेन है प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट माइनस सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा. अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें सो 1 डिवाइडेड बाय f प्लस डेल्टा f विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय r. अब यहां से n1 और n2 की वैल्यू रखें तो f प्लस डेल्टा f की वैल्यू r divided by n1 plus n2. So n plus delta n plus delta n minus 2 तो ये टोटल हो जाएगा 2n plus delta n minus 2. So when n1 is equal to n2 is equal to n, focal length is f is equal to r divided by 2 in bracket n minus 1. और सेकेंड केस में जब n1 is equal to n, n2 is equal to n plus delta n, then the focal length of lens f plus delta f is equal to r divided by 2n plus delta n minus 2. Right? Now, if you see the option B, given that focal length of lens is 20 centimeter, n1 is equal to n2 is equal to 1.5, delta n given is 10 to the power minus 3 and delta f की वैल्यू दी गई है 0.02 सेंटीमीटर और यही शो करना है आपको. So from equation 1 and 2, once you simplify, so you can say that delta f divided by f is equal to
डेल्टा एन divided by 2n plus delta n minus 2. Now, given that n1 equals to n2 is equal to 1.5, delta n is equal to 10 to the power minus 3, f is equal to 20 centimeter, and delta f की वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर ये आना चाहिए. So from here we can say that delta f is equal to f into delta n divided by 2n plus delta n minus 2. तो f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखें क्योंकि डेल्टा f की वैल्यू सेंटीमीटर में ही दी गई है. into 10 to the power minus 3 divided by 2 into 1.5 into plus 10 to the power minus 3 minus 2, which comes 0.02 centimeter. That means option B is correct. डेल्टा f की वैल्यू डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक इन सेंटीमीटर 0.02 सेंटीमीटर ही आती है और इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है. अब स्मॉल कॉन्सेप्ट ध्यान में देना है कि जो भी लेंस डिजाइन करते हैं, द डाइवर्सिफाइंग नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है. इफ अनसर्टेनिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस देन डाइवर्सिफाइंग नेचर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस. जबकि यही डाइवर्सिफाइंग नेचर इंक्रीज होगा अगर अनसर्टेनिटी इन फोकल लेंथ इंक्रीज होगा. मीन्स व्हाट? अनसर्टेनिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगी तो अनसर्टेनिटी इन फोकल लेंथ इंक्रीज होगी. दिस इज द पॉइंट और हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ऑप्शन ए कहता है कि इफ डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन is less than 0, then delta f divided by f is greater than 0 and this is correct option. और जब ये करेक्ट है तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. अनसर्टेनिटी फोकल लेंथ में ज्यादा होगी देन द अनसर्टेनिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ इसका मैग्नीट्यूड ये स्मॉलर होगा डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन इन मैग्नीट्यूड. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन डी. तो क्वेश्चन आपका आप फोर्थ ऑप्शन डी है क्या कि अगर कॉन्वेक्स सरफेस को सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के कॉन्केव सरफेस से रिप्लेस कर दें तो डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ और डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. दे रिमेन्स अनचेंज एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आप सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव से चेंज करते हैं तो केवल साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, लेकिन मैग्नीट्यूड चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो, या डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ हो या डेल्टा एन डिवाइड बाई एन हो, इनका मैग्नीट्यूड
वो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज, हेंस ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. So, option A, option B and option D are correct. Hope this answers your question. Please welcome. Now let's see the second question. Second question is from standing wave. This is from Melde's experiment. So let's see the question number 2. In Melde's experiment, a string is vibrating in 3 loops. 3 loops. When a mass of 8 gram placed over the pan. Now, what mass should be placed on the pan so that the string vibrates in 5 loops, neglecting the mass of a string. Neglecting the mass of a string. So, if you see the standing wave in stressed string in case of sound wave. So, frequency of sound wave in a stressed string, frequency of sound in a stressed string, F is equal to P order of plucking, which is equal to number of loop. L is the length of a string. In bracket, T is the tension in the string divided by mu is the mass per unit length of the string. So T is the tension, mu is mass per unit length, and P is number of loop, which is also means indirectly the order of plucking. जितना order of plucking होगा उतने ही loop होंगे. Now emphasis is here Melde's experiment. In case of Melde's experiment, frequency of vibration remains same. That means the frequency F1 will be equal to F2. This is in case of Melde's experiment. अब अगर यहां से आप देखें तो F into 12 under root mu is equal to P order of plucking, which is equal to number of loop under root into under root T. अब अगर F1 बराबर होगा F2 के, that means P1 under root T1 will be equal to P2 under root T2. राइट? अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं P1 होल स्क्वायर इंटू T1 बराबर होगा P2 होल स्क्वायर इंटू T2. सो हमें T2 चाहिए. T2 will be equal to T1 into P1 whole square divided by P2 whole square. Keeping the value, T1 given is 8 gram into
into P1 is 3 loop whole square divided by P2 5 loop whole square, which is equal to 8 into 9 divided by 25. Hence, T2, which is tension but in the terms of mass, will be equal to 2.88 gram. So, the mass which is to be placed over the pan to vibrate the string in 5 loop is 2.88 gram. Hope this answers your question. Please welcome.